Hello students, welcome to my channel. In last video of biological classification, we have discussed some classification regarding Monera and Protista, and now the discussion is of fungi. So last term we have discussed fungi are of basically three types: saprophytes, parasitic, and mutual benefited, right? And these are called if fungi is mutually associated with algae, then it will be known as lichens. If fungi is mutually associated with हायर प्लांट्स जब भी हम टर्म लेंगे तो उनका नाम होगा है वो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के रूट से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे? माइकोराइजा, करेक्ट। अब जरा इसे देखें, लाइकेंस की बात करेंगे। लाइकेंस क्या होते हैं? एक एसोसिएशन है बेनिफिशियल with other organisms in mutually beneficial relationships. For example, fungi associate with algae to form lichens. lichens या lichens. Other fungi associate with the roots of plants as mycorrhiza. Myco terms stands for myco means mycology से मतलब फंगस, और rhiza means fungus plus roots of higher plants. जब भी हम टर्म हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट्स कौन होते हैं? जिम्नो प्लस एनजीओ, ये हायर में आते हैं, बाकी सब नीचे लोअर प्लांट्स में आते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, राइट। ओके, और सबसे नीचे तो थैलोफाइट्स हो गए। ओके, डिस्कशन करें यहाँ पे अच्छे से। Both lichens and mycorrhiza, the relationship shared by fungi with the algae and the plant is called symbiosis. सिम्बियोसिस, दोनों को फायदा। Fungi can reproduce vegetatively, asexually, as well as sexually. Fungi reproduce vegetatively by fragmentation, fission, and budding. They can reproduce asexually by either one of the following spores: conidia, zoospores, or sporangiospores. Note the points: sporangiospores. They also reproduce sexually by either oospores, ascospores. आपने पीछे देखा एसेक्सुअल, कोनिडिया, बाकी चीज़ें। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जब भी क्लासीफाई करोगे फंगस को रिप्रोडक्शन वाइज तो कहोगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल टर्म्स में। Or Basidiomycetes. तीन टाइप हो गए यहाँ पे सेक्सुअल में। All these spores are produced in structures called fruiting bodies. There are 3 steps in the sexual cycle: plasmogamy, karyogamy, and meiosis. मियोसिस जानते ही हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। The first stage involves the fusion of protoplasms between 2 motile or non-motile gametes. बहुत आसान है। प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म यानी सेल्स का आपस में फ्यूज होना। गैमी मतलब ही होता है फ्यूज होना, तो प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म क्या हो गया? फ्यूज हो गया। अभी आगे देखें। This is called plasmogamy. Plasmogamy occurs when 2 haploid hyphae of compatible mating types fuse. आपस में After plasmogamy, the 2 nuclei बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले भाई देखो सेल से सेल मिक्स हुआ, राइट? सेल से सेल देखो मिक्स हो गया। अभी दो सेल्स के अलग अलग न्यूक्लियस थे। अब अभी क्या होंगे? अब टर्म आया कैरियोगैमी। कैरियो, जब भी टर्म आएगा कैरियो, कैरियन से बना हुआ कैरियो, ये होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। अब न्यूक्लियस फ्यूज होगा ये आपस में, ठीक है ना? तो पहले क्या टर्म देखो, 3 स्टेप में है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे दिया? पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और फाइनली क्या हो जाएगा? मियोसिस। fuse together in the second stage known as karyogamy. फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस मिक्स हो गया। Whereas in some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in the formation of diploid cells, or 2N. In other fungi, like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage occurs. This condition of 2 nuclei per cell is called dikaryon, डाइकैरियन। and the phase is called
एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएं तो क्या बोल देंगे? डाइकैरियोन। डाई का मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएं, जबकि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना। टर्म्स को समझें। Dikaryophase. Later, the parental nuclei fuse to make a diploid cell. The third stage involves reduction division, that is, meiosis, Meiosis to जानते हैं। form haploid spores. Meiosis occurs in the fruiting bodies of fungi. Together, the fruiting bodies, the mode of spore formation, and the morphology of the mycelium form the basis of the division of the kingdom fungi into various classes. There are four main classes of fungi: Phycomycetes, ये आपका होमवर्क भी है। आपको फंगस की क्लासिफिकेशन करनी है। फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूटीरोमाइसीट्स। हम इन सब के बारे में बात करेंगे, राइट। बेसिडियो ही है जिसे हम मशरूम कहते हैं। मशरूम, जब जो भी आप मशरूम खाते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोटीन रिच फंगस होता है, बेसिडियोमाइसिस कैटेगरी में आता है, जिसको हम ड्यूटीरो बोलेंगे। इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगस या फंजाई इम्परफेक्टाई, राइट। तो इम्परफेक्ट फंगस ड्यूटेरोमाइसिस बोलते हैं। कुछ कॉमन टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या रिलेशन मिलेगा मैं बताता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। इनके पूरे जो डिफरेंस हैं आपको लिखने हैं। क्लासीफाई करेंगे 4 पार्ट्स में। यह आपका होमवर्क भी है। Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Phycomycetes are found in aquatic habitat, decaying wood in moist places, and as obligate parasites on plants. Mucor, Rhizopus, and Albugo are examples of Phycomycetes. Note the points. Phycomycetes have aseptate and cenocytic mycelium. जब भी हम टर्म लेते हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट का सिंपली मतलब होता है, ये मान लो एक सेल है, सेल की पूरी पूरी चेन है, मतलब ये मान लो फंगस है। तो फंगस की सेल में बीच में क्या ना हो, बॉर्डर्स ना हो, समझ गए ना, बीच में ये गैप ना हो। करेक्ट, याद रखेंगे हमने क्या कहा, ये बीच में गैप ना हो। क्लियर, समझें। तो अगर कोई फंगस है, सेल्स कैसे हैं, बीच में बिना गैप के हो, आराम से अपने खूब सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे इनको, ये एसेप्टेट है, राइट। एसेप्टेट, करेक्ट, सेप्टम नहीं है। और अगर ऐसे सेल्स जिनमें बीच में ऐसे गैप्स आ जाए तो क्या बोलते हैं इनको, सेप्टेट। दोनों में डिफरेंस है ना, एसेप्टेट और सेप्टेट, याद रखेंगे। हमें सब में डिफरेंस करना है। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो में डिफरेंस क्या है, याद रखेंगे। फंगस की कैटेगरीज हैं फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो। Reproduce asexually by zoospores in the case of motile gametes, and by aplanospores in the case of non-motile gametes. On the other hand, sexual reproduction leads to the formation of zygospores after the fusion of gametes. The gametes may be either similar or dissimilar. Members of the Ascomycetes class are commonly known as sac fungi. सैक, For बोरा। example, Aspergillus, Claviceps, कैल्विसेप्स परपुरिया। and Neurospora. बहुत इंपॉर्टेंट They तीनों। can be unicellular like yeast or multicellular like penicillium. ये सब फंगस हैं। They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous. कॉप्रोफिलस समझते ही हैं, डेडोडिगाई That मटेरियल। is, they grow on dung. डंग मतलब गोबर में। Ascomycetes have branched and septate mycelium. They reproduce asexually by spores called conidia that are produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. नोट द पॉइंट्स। एस्कोमाइसीट्स, Sexually, they reproduce through spores called ascospores that are produced endogenously in sac-like asci. समझे।
ये एक फंगस बॉडी है पूरी पूरी। ये क्या है? पूरी फंगस की बॉडी आप देख रहे हो, ये ज़मीन में मालूम लगा हुआ है फंगस। इस फंगस में देखो कितने बहुत अच्छे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये क्या? छोटे छोटे स्पोर्स बने हुए हैं, ये स्पोर्स। और यही स्पोर्स क्या करते हैं? यहीं से रिप्रोड्यूस, ये स्पोर्स निकल के बाहर आएगा तो एक नया फंगस बना देगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्पोर्स बॉडी है इनकी। The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. एस्कोकार्प्स, एस्को Some members of Ascomycetes, like morels, are edible, एडिबल, ये खाए जाते हैं। while मोरेल, others, like Neurospora, are used in biochemical studies. Some common examples of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi, and puffballs. याद रखेंगे बेसिडियोमाइसीट्स में जो एडिबल पार्ट हो, एडिबल जो क्लासिफिकेशन में आता है फंगस, वो है मशरूम्स। सारे मशरूम्स भी नहीं खाए जाते, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं देख लिया तो उसे मशरूम समझ के खा लिया, पॉइजनस भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है इन पॉइंट्स को। They grow in soil, on logs, and inside plant bodies as parasites such as rust and smut. Like Ascomycetes, Basidiomycetes too have branched and septate mycelium. Vegetative reproduction by fragmentation is a common form of reproduction among Basidiomycetes. Sexual reproduction in Basidiomycetes takes place even in the absence of sex organs. नोट, In the plasmogamy stage, two somatic cells of different genotypes fuse to form a dikaryote. नोट द पॉइंट। The dikaryotic mycelium gives rise to the fruiting body called the basidiocarp. बेसिडियोकार्प, कार्प का मतलब हमेशा होता है फ्रूट। जब भी टर्म दिया जाता है कार्प, ये हमेशा क्या दिखाता है? फ्रूट। समझ गए ना? तो बेसिडियोकार्पी जो टर्म जाएगा, बेसिडियो फ्रूट, फ्रूटिंग बॉडी है। इतने क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडी, राइट। नेक्स्ट टर्म में हमारा डिस्कशन और होगा इसी पे, ड्यूटेरोमाइसीट्स में।